3 times Omkara together. Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Om Vasudeva Sutam Devam Kansachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Hari Om. Hari Om and welcome to one and all present here today. It's so nice to be back to Chandigarh again with all very near and dear audience of Chandigarh. Though the hall is very small, but the hearts of the Chandigarh Vasi are not small, they're very big. So thank you very much for again calling me to your dear, nice city. And I also really love the city, which is very planned and neat and clean in different aspects in comparison to other cities of our own country. Today I thought, let me just start with something which really important in everyone's life. So there are 3 questions I'm going to ask to every one of you. The first question, what is that source which makes you very happy? It's the first question. ऐसा कौन सा सोर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है? एक प्रश्न है. You just think, I'm going to give you a good, nice food for your brain. I'm giving you 1 minute to think.
Good question. Yes, second question. What is the biggest challenge in your life? Good question. Third, what is that source which makes you very unhappy? Swamiji, please don't ask this question. And don't try to expose us. Three questions are extremely important in everyone's life. And that what really, spins us or spins our life all through years and years. Ayana ji बोलिए. तो इसके सारे के answers we are going to get in this beautiful text called as Bhaja Govindam. Right? So let me start with the first question. What is that source which really brings happiness to all of us? So if I say, you are near and dear, Swamiji, sorry to say, near and dear, definitely are the source of happiness, but source of sorrow too. Yes or no? Yes. So that's a very good thought, or that's a good chintanam that we should be able to do. We'll do it in this 3 days. दूसरा प्रश्न था, कौन सा चैलेंज हमारे जीवन में सबसे बड़ा है? आपने कभी सोचा कौन सा ये चैलेंज है? इससे बड़ा कोई चैलेंज है ही नहीं. Okay, so that's also we're going to think. Third is, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से सबसे ज्यादा हमको अनहैप्पीनेस मिलता है? हाँ जी. सो अगर इस 3 प्रश्न के उत्तर हमको सही सही मिल गए, और if we can overcome all these 3 important aspects of our life can be really wonderful and full of joy. So I keep telling to everyone, one must learn how to live the life in joy and not for joy. Can you please repeat? How to live the life in joy and not for joy. ध्यान में रहेगा सबके? आया ना? Yes. How to live life in joy and not for joy. So, if we live life for joy, then we are postponing our happiness. What are we doing? We are postponing our happiness. आज का जो मेरा happiness है, मैं वो कल पे postpone कर रहा हूँ, और पता नहीं कल कैसा दिन होगा, कैसे लोगों के साथ में मिलूंगा, और मेरी अपनी कंडीशन क्या होगी. तो फिर इससे मेरा हैप्पीनेस तो ऐसे ही डामाडोल रहेगा, है ना? Yes. So therefore, Bhaja Govindam is a text where it says that how to understand to live in joy and not for joy. See? So little background of Bhaja Govindam. This text is also called as Prakarana Grantha. We have studied one Prakarana Grantha very strong. What was the name? Swamiji, question. Tattva Bodh. What was the text? Tattva Bodh. What is called as Prakarana Grantha? Called as preliminary text. क्या कहते हैं उसको? Preliminary text. To understand the
greater and the higher concepts of Vedanta. Okay? Yes. So this is called as Prakarana Grantha, preliminary text. We have studied Tattva Bodh. So we are going to combine this with the Tattva Bodh. Also we have studied one chapter of Bhagavad Gita, that is the third chapter of Bhagavad Gita also. Right? So that also we are going to add to it. So Bhaja Govindam is a Prakarana Grantha. It is one of the beautiful text which is Prakarana Grantha, the preliminary text which will expound all of us a different concept to understand the higher meanings of Vedanta. What is called as Vedanta? Acha. Vedanto Nama Upanishad Pramanam. What it is called as? Vedanto Nama Upanishad Pramanam. When Vedanta comes as a subject, then Pramanam means measure, is Upanishad. So that subtle topic which is handled in the Upanishad, and Upanishad comes at the end portion of Vedas, and therefore the portion which is extremely subtle in Upanishad is called as Vedanta. Is this clear to everyone? Yes or no? Yes. जो सब्जेक्ट उपनिषद में हैंडल किया गया है वो बहुत सटल है, सूक्ष्म है। ऐसा उपनिषद का जो सब्जेक्ट हैंडल किया है, वेदों में उपनिषद ये एंड में आते हैं, वेदों के आखिरी पोर्शन में आते हैं, इसलिए उस पोर्शन को वेदांत कहा गया। ध्यान में आ गया सबको? So Vedanta. Now, this Prakarana Grantha first makes us realize, understand the life well. क्या है ये पहला पॉइंट? Understand the life well. स्वामी जी, ये प्रश्न आप हमको कब पूछ रहे हैं? When all our hairs are already gone into different shades. Fine. So, जीवन में यही एक sort of a very paradoxical time है और a period है where we try to understand something when we are in trouble, or we go through different bad patches of the life, and then we wake up and they say, my God, what's happening in my life? But our scripture says, every one of us, before starting our life, should know what is life. Before starting, what is called as before starting the life? That means when 10 की घंटी बजती है, that means what? 13. क्या हो गया? 13. There onwards your personality becomes extremely strong. Yes or no? Till then, you listen to your mother and father. After 10 घंटी बज गई, then nobody listens to anyone and then says, I am the supreme and I know everything. So this is what happens to all of us. So this I know everything comes from where? Nowadays Google. Or otherwise from the different sources of friends and relatives and whatnot. So ask one question. Whatever information you have received till today, as good and bad, did you ever ask this question, what is an authentic source of this? This is basically of them in our life. Yes or no? We have never thought of
this information is coming from where? And why should I accept this information, whatever it is? High energy, like a WhatsApp messages. People are so careless that it comes forward. And then nobody knows that what is an authenticity of this message. Yes or no? And we all have done and we keep doing. But we all must know. First, let us find out the authentic source of information first. Extremely important. So, an example of our own life. Like if we get some disease, then we go to a specialist, and if we are not still satisfied with his diagnosis, then we go to the super specialization or the super specialist. Yes or no? Why? Because we want to be more and more connected to the super authentic source. High energy belief. Now one question, very simple. When you are sad, did you ever ask, why am I sad? What is the source of sadness? Did you ask? Please keep your hand on your heart and ask, कि मैंने ऐसा प्रश्न पूछा? बोलिए, 95% will say no. See, so simple it is actually. The whole universe is based on a supreme law which is called as cause and effect. Yes or no? बोलिए ना. Yes. Completely depend on cause and effect. Now, sadness is a cause or it is an effect? Bolo ji, it is an effect. Should we not find out the cause of it? आया जी, जैसे हम कोई भी रोग का निदान करने पहुंच जाते हैं, डायग्नोसिस करने पहुंच जाते हैं, different laboratories में, and what not, they really cut your pocket through the nose, but there is no choice. We have to do it. Similarly, we should be able to develop this inquisitiveness that next time I will not allow my mind to be sad. Why? Because I am going to find the cause of it and I am going to rule out the cause. Then, if you remove the cause, can there be an effect? बोलिए ना. There cannot be an effect without the cause. Now the second principle of Vedanta, extremely beautiful. It says cause is one, effects are multiple. This is a very important point. Cause is one, effects are एक cause है क्या? Misunderstanding. Effects कितने होते हैं जी? बोलो बोलो ना. कितने effects होते हैं? गिनती नहीं उसकी. ध्यान में आ गया? इसका मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दूर कर दो तो इतने सारे इफेक्ट, कितना सेकंड लगेगा जाने को? बोलो जी. This much. Yes or no? This is a point. So Vedanta touches these very simple but the core, very important subject of the life. And
One such beautiful explanation given by Adi Shankaracharya ji is Bhaja Govindam. The other name of Bhaja Govindam is Moha Mudgara. What is the another name? Moha यानी delusion, Mudgara यानी hammer, hathoda. So it is a hammer of a knowledge by which you are going to crack the delusion. Got it? Swamiji, the question remains, what is delusion? Yes or no? What is delusion? This is a very simple but very important aspect of Vedanta. What is delusion? So, let us take one short, small story. It happened so, once a guru and a shishya were traveling in the forest. और ऐसे हुआ, अंधेरा छा गया. जैसे अंधेरा छा गया, तो शिष्य थोड़ा कमजोर था, वो डर गया. बोले गुरुजी कैसे होगा, अभी तो अंधेरा हो गया और यहाँ तो बड़े बड़े हिंस्र प्राणी रहते हैं, उनको पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, फिर क्या करेंगे? गुरुजी ने बोला खाने के बाद क्या कर सकते हैं? खाने के बाद पहले अच्छा पहले कुछ कर सकते हैं. बोले ऐसा करो, मैं सो जाता हूँ, तुम पहना दो. फिर तो चांस ही नहीं रहेगा, मुझे ही खाएगा पहले. फिर मैं झाड़ पे चढ़ता हूँ, आप नीचे रहना, आप तो स्ट्रांग हैं. ठीक है, और एक काम कर, देखो बाजू में मंदिर दिख रहा है छोटा सा, आप तो मंदिर में एक बार जाकर भगवान को प्रणाम करके आओ, ताकि आपको थोड़ी शक्ति मिलेगी. मैं आप नहीं आएंगे? बोले मैं यहाँ हूँ, आ जाओ. शिष्य के धीरे धीरे मंदिर में पूरा घना अंधेरा छाया हुआ था और एक छोटा सा दीपक बहुत ही छोटा जल रहा था कि जिसकी उस लाइट में कुछ कुछ ऐसे दिख रहा था. ये गया और जोर से चिल्लाया, गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ. वो भागते वापस आए. क्या हो गया? एक नहीं, दो बड़ी बड़ी शेर है. अच्छा, मैं भी जाने वाला हूँ. मैं यहाँ रुकने वाला नहीं होगी तो यहाँ से भागने वाला हूँ. तुम भागोगे तो पकड़ेगी, तो तुमको आवाज पहचान जाएगी तुम्हारे पैरों की, फिर तुम्हारे पीछे भागेगी. चलो मेरे पास मंत्र है. बोले क्या? मैं ना कोई भी वाइल्ड एनिमल को टीम बना सकता. सच में? आज तक तो कोई बताया नहीं आपने मुझे. सिद्ध मंत्र हमेशा नहीं बताता. चलो, गुरु आगे और शिष्य पीछे. गुरु ने क्या किया? यहाँ रुको. छोटा सा वो दिया जो जल रहा था, मंदिर में जाकर उसको उठाया और जहां वो शेर था उसके सामने जाकर बैठ. तो वो दौड़ के आया. अरे ये तो लकड़ी का शेर है. फिर उसके जाके ऊपर बैठ गया. उसके कान पकड़े. उन्होंने पूछा, अभी कहाँ गया आपका डर? बोले कौन सा डर? कि जब उसको पता नहीं था कि सामने जो शेर है वो सच्चा नहीं है, तब तक उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सच्चा है. यही बात होती है हम सब के जीवन में
कि हम जो देख रहे हैं उसी को सत्य मानते हैं और दुखी होते रहते हैं, सुखी भी होते रहते हैं। जिसको सच का पता चल जाए वो दोनों से परे चले जाते हैं, पर जिसको सच का पता ना चले वो मोह ग्रासित घूमते रहता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, आज मैं करते होता है कि नहीं बोलो जी? कभी कभी तो माय गॉड, वेयर आर यू? डोंट आस्क मी, आई एम ऑन नाइन्थ क्लाउड। And someday, where are you? Don't ask me. I'm in kai का कोपगृह। हाँ, kai का कोपगृह। आपको पता है ना kai का? कोप यानी जब एंग्री या एंगर होता है, कोई भी one person gets angry, तो वो जाके फिर जनरली महिला है, वो जाकर के घर में I don't want to talk to you. Okay, and for तो ये निशानी है किस चीज की? मोह। किसकी? मोह। कि जो ऐसा हम करते हैं तो उनका जान भी समझना चाहिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं जीवन के अपने इतने सुंदर क्षण बर्बाद करूं। Please take it from me. There is nothing, there is no situation, there is no world, there is no vyakti as important as my happiness. Think about it. We get carried away by things, people and situation. Are we not? Yes or no? Yes. I am not trying to tell you be selfish utterly. No. I am trying to tell you to understand yourself that you are above all this. Do not go behind and do not let yourself go under the carpet where people will really step on you. Okay. So इसलिए ये भज गोविंद में बोला गया है prepare yourself। क्या बोला गया है? Prepare yourself। Now next important question, prepare yourself, what to prepare? What to prepare? So preparation of the mind। किसकी प्रिपरेशन है? माइंड। कोई भी दुख आपको कहाँ होता है? बोलिए जी। हाथ में, पैर में, कहाँ होता है? आया ना? इसका मतलब it is a locus of the joy and sorrow both। Is this clear to everyone? Yes or no? Yes. Now, let us talk about this mind a little more. Mind is the bridge between intellect and the physical body. क्या है mind? It is a bridge between an intellect and the body. Okay, it connects both. And if it is in its supreme states, both ends are extremely happy. But if it is in its miserable state, both ends are extremely miserable. Please note it.
So it is all game of mind. Our life is nothing a game of mind. जिसने इस माइंड को समझ लिया और अपना दोस्त बना लिया, उसका जीवन तो बल्ले बल्ले जी। बट जिसने वो नहीं किया, उसका जीवन तो हाय हाय जी। ये पॉइंट है। तो हाउ टू मेक आवर माइंड आवर फ्रेंड? उसके लिए माइंड की कमजोरी और माइंड की स्ट्रॉन्गनेस दोनों समझना जरूरी है। माइंड की कमजोरी यह है कि विदाउट द एंकर इट कैन नॉट रिमेन एट वन प्लेस। एंकर, कोई भी सपोर्ट के बगैर वो एक जगह रह नहीं सकता। इसकी बड़ी कमजोरी है। और इसकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है? अगर इसको कुछ अच्छा लगा तो इससे कोई बच नहीं सकता, उसको हासिल करके रहता है। उसको अच्छा लगना चाहिए। कितना अच्छा! एक मूवी का शॉट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। I'll share with you. कितना अच्छा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी कॉम आपने देखा है? मेरी कॉम नहीं देखा, प्लीज देख लो। वेरी इंस्पिरेशन मूवी ऑफ a great boxer of India who won the Olympic medal. वो जब पहली बार कोच के पास जाती है तो वो कोच उसको पूछता है कि आपको बॉक्सिंग क्यों सीखनी है, 5 मुझे रीजन बताओ। वो कहती है, फर्स्ट आई लव बॉक्सिंग, सेकंड आई लव बॉक्सिंग, थर्ड आई लव बॉक्सिंग, फोर्थ आई लव बॉक्सिंग, फिफ्थ आई लव बॉक्सिंग। कहाँ पहुंच गई देखो भैया, बोलो किसकी है ये मैजिकल पावर? माइंड की मैजिकल पावर। और अगर आपको मैजिकल पावर्स ऑफ द माइंड देखना है तो स्वामी चिन्मयानंद जी इटसेल्फ इज अ मैजिकल पावर। जो व्यक्ति भगवान को मानता ही नहीं था भैया, जो व्यक्ति ऑनक्वेस्ट आपने देखी है? प्लीज देखिए, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। टुडे यू हैव टू सी ऑन अ क्वेस्ट। व्हाट इज द मूवी नेम? On a Quest. It is available on a YouTube, both Hindi and English. Whatever version you want to see, you see. Okay? तो मैं उसमें बताता हूँ आपको एक छोटा सा पॉइंट। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी नेम, प्रीवियस नेम बालकृष्ण मेनन, happened to go to Swami Shivanand Ji Maharaj in Rishikesh of that time. फिर he was a journalist, so he listens something and then comes out, doesn't see here and there, and understand that he is something very great, and these Swamis and they are all parasites of the, society. That's the attitude, and that's why he just takes a smoking candle and starts smoking in the veranda, and next to him is a board. A very simple, humble woman comes and tells him to turn. And she says, yes, educated, but never understood the meaning of education. Once teach me.
what do you understand by education? Again, I am asking you a question. Is education only a way to earn money? Can this be education? Ask yourself. Do you want to restrict yourself to this education where you only earn money and do not know anything about the life? Good question or not? So, education should be holistic one, where you understand yourself, the world around, and your own duties in the world, and what to do and what not to do. That is called as a holistic approach to life. So Swami Chinmayananda ji, इस बालन को जब पता चल गया कि something called as वेदांत है, जो उनको अच्छा लगा, ध्यान देना, जिस दिन वो आश्रम गए उससे 2 महीने के अंदर उन्होंने संन्यास लिया। Imagine, 2 महीने में। I'll tell you this beautiful experience of him, which is again a very beautiful quotation, and I love that quotation not because to hurt anyone, but how sharp and how clear is the thinking of Swami Chinmayananda. You know, first American, very big, very successful tour, he finished and came to Delhi. And so many journalists were there, and he says, wow, one of our journalists' friend who became a sannyasi and who came across the whole ocean and came back, and then lots and lots. One person was very witty and very sort of different. So he asked, can I ask one question, very personal? Swami Chinmayananda, as you know, so some of you, he says, yes, why not? There's nothing personal. I am a transparent person. so he said, why did you take a sannyas? He paused a second and said, what another wise and intelligent person can do? What otherwise an intelligent person can do? What an answer! इसका मतलब है कि जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो कुछ बहुत बढ़िया हो। एक ही चीज है इस पूरे संसार में, वो है परमात्मा, उसको पाना है और क्या करना है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उनके आंसर का। कौन सा पॉइंट में बोल रहा था? एक बार उस दिल को अच्छा लगा, छोड़ता नहीं। आया ना, ये IAS ऑफिसर ही थे, पूछो। बस एक बार लगा। ऐसे अनेक लोग हैं इस दुनिया में जिसको वो समझ में आया कि ये चीज उसे अच्छी लगी। दोनों तरफ से, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव ऑल्सो। बिन लादेन को देखो, उसको लगा कि बस मुझे ट्विन टावर उड़ाने हैं, उड़ाए उसने। कहां से? यहां से लगा। आया ना, बोलो। वैसे ही लोग बोलते इससे मुझे प्यार हुआ, और दूसरे दिन बोलते नहीं हुआ। पूछो प्रश्न हुआ था क्या? स्वामी जी यही तो पूछ रहे हैं सालों से। This is a very big question. Ask yourself, are you really in love with someone unconditionally? If you ask this question once, it is a big question for
Every one of us. Unconditionally आपने इस दुनिया में किसको प्यार किया या करते हो? समझ में आएगा। सब कुछ कंडीशनल है। जब कंडीशनल प्यार होगा तो शास्त्र उसको प्यार नहीं कहता है, उसको कहते हैं अटैचमेंट। तो फिर शास्त्र में कहता है जो आ सकता है वो जा भी सकता है। आ सकती है, जा सकती है। वो आ भी सकती है ना, तो वो जा भी सकती है। आने वाला जाने वाला प्यार कोई प्यार होता है? आप सोच के देखो ना, बोलिए तो। ओके, सो ये बैकग्राउंड चल रहा है सर। मूवी तो अभी शुरू ही होने की है। बैकग्राउंड आपको अच्छा लगा? This is the background of our Bhaja Govindam to prepare our mind. Okay, let us start. The first book. You all have a book with you. Somebody has sponsored, so may God bless that person with a great peace and mental tranquility. Please repeat. Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Govindam Bhaj Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karne, Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karne, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Nahi Rakshati Dukram Karne, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Govindam Bhaj Mudhamate, Govindam Bhaj Mudhamate. I have a request for all of you. Tomorrow when you come in the morning, you have to by heart this shloka. Simple shloka. Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Nahi Rakshati Dukram Karne, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudhamate. Adi Shankaracharya ji, Bhagwan, why he be called as a Bhagwan? Adi Shankaracharya Bhagwan, who wrote the commentaries on Prasthanatraya. What is called as Prasthanatraya? Little technical, that we all must know. Prasthanatraya means basic scriptures of the Vedic religion. Basic scriptures of Vedic religion. What are they? First, Vedas. Second, Bhagavad Gita. Third is Brahma Sutra. What are they? Three. First, Vedas. Little louder, everyone. Vedas.
Second, third, Brahma Sutra. Vedas are called as Shruti Grantha. Called as Shruti Grantha. They are not written by any person, but they are revealed literature. People, those who are extremely pure in their heart, they directly could listen to the Brahmanada. And that's called as Vedas. So there is no writer, author to Vedas. It is all only the expression of the Supreme Truth in the word form. Second, Bhagavad Gita, called as Smriti Grantha. What is called as? Smriti Grantha. Smriti Grantha. Smriti means memory. From the Bhagavan's memory, Bhagavan Krishna has selected only that which is extremely important for all the worldly people, and that's called as Bhagavad Gita. It is extremely suitable, applicable in everyone's life. And the third, which is called as Brahma Sutra, called as the Nyaya Shastra, which is written by Veda Vyasa Bhagavan, that if any adulteration, if somebody wants to do in our first and second scripture, then the third scripture will not allow it. Why? Because all sutras will explain each and every mantra so correctly that if there is any adulteration, all the masters can find out in minutes. What a beauty of our scriptures. So these are the three basic scriptures of our Vedic religion. Got it? Then there are two other important aspects of knowledge. One is called as Mahabharata, another is called as Ramayana, which is the history, the itihas. Again, please note it. People label it as mythology. It is not mythology, it is itihas. What does it mean? Does it happen? Itihas, Mahabharata and Ramayana. तो कभी भी अपने बच्चों को या किसी और को भी माइथोलॉजी करके नहीं बताना है, और कोई माइथोलॉजी बोलता है तो उसको करेक्ट करना है वहीं के वहीं. It is not mythology, it is history. ध्यान देना. कई बार आपने देखा होगा नासा ने द्वारका की पूरी सिटी को फाइंड आउट करके लोगों को बता दिया. आया जी. नासा ने राम सेतु निकाल करके लोगों को पिक्चर निकाल करके दिखा दिया. आया ना. And n number of such important things to make believe that this is not myth, this was a reality, this is a reality. ठीक है. So ये है महाभारत और ये इतिहास. और अनदर शूट इज कॉल्ड एज पुराण ग्रंथ. 18 पुराण है. तो ये हमारे ज्ञान का भंडार है. ये है ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज. हमने पहले शुरू किया था. What is the authentic source of knowledge? These are the granthas which are the authentic source of knowledge. ठीक है. Now coming back to Bhaja Govindam, Shankaracharya ji, who has studied every scriptures and understood that जन सामान्य के लिए बहुत बड़े-बड़े कंसेप्ट जल्दी समझ में नहीं आते, इसलिए छोटी-छोटी चीजों को पहले समझाना पड़ेगा. और एक बार वो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे. जंगल यानी थोड़ा सा छोटा सा गांव था, जहाँ एक व्यक्ति बहुत बुजुर्ग सारे छोटे-छोटे बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहा था. उसकी एज 80+ थी. उन्होंने देखा, देखो इस समय में इस व्यक्ति ने भगवान के नाम को गुणगान करना है और ये लेके बैठा है संस्कृत के रूल, ये काम आने वाले हैं इसके. वो आखिरी समय ऐसा उनके मन में विचार आया और ये पहला श्लोक का जन्म हुआ. तो देखो, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षते विपुल.
हम सबको जीवन में ध्यान रखना प्लीज, एक समय मिला है, X years of life. Okay, I'm going to give little more deep touch to it. What does it mean, X years of life? X breaths in your life. श्वास, ध्यान देना। अगर आप प्राणायाम करते हो और अपने ब्रेथ को स्लो डाउन करते हो तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और आप एंशियस रहते हो, परेशान रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, आपकी ब्रेथ डिस्टर्ब रहती है, इसकी वजह से आपका लाइफ घटने वाला है। Choice is yours. Clear? Okay. Now, a simple technique I'll tell you. How to understand this breath. Generally, all human beings, they have their number of breath in a minute from 18 to 22. कितना? 18 to 22. अभी आप देखना, घड़ी लगाओ आप, घड़ी, घड़ी मैं लगा, 1, 2, 3. I start, you also start. Counting your breath. Close your eyes. Stop. 2-3 लोगों को मैं पूछूंगा, ठीक है? अम्मा 18, 16, 12, 7, 12, 16, 7. Okay. देखो, हर एक व्यक्ति का इतना है। You ask me. 4. They have also learned. 4. It's a technique. So you just put your whole concentration on your breath and go deep within your lungs, expand them and release slowly. Every day if you practice it, then it becomes a nature of your life. Nature means आपका स्वभाव। ध्यान में आ गया? So, okay. So, life. That means this many breath. अभी आप सोचो कि आप परेशान होकर के जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, आपके ब्रेथ कम हो जाते हैं, मीन्स फास्ट हो जाते हैं, तो यू आर रिड्यूसिंग योर लाइफ. डू यू लाइक इट? थिंक. Very practical first and very so called as gross. But it is called as I am unknowingly killing my own day by day and reducing my life in utter ignorance. Ayanaji. Okay, so let us understand. This is important. Second, when life is there,
then we must understand what is life. So as scriptures explain, life is nothing but series of experiences. What it is? Little louder. Series of experiences. अभी मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कभी जन्म में जो व्यक्ति जिंदा है उसका एक्सपीरियंस बंद होने वाला है? बोलो जी। नहीं, एक्सपीरियंस बंद होने वाला नहीं है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल द सिचुएशन कम टू यू बाय गिविंग a pre-intimation that, my dear, I am going to come so and so day and so and so time in your life. बोलो जी, बोलो बोलो। नहीं, इसका मतलब है should you not be prepared for every situation? आया ना? बोलो जी। No, very important question. Is your mind is in your control? मैंने क्यों ये प्रश्न पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मेजॉरिटी टाइम्स आंसर विल बी नो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट समबडी विल हैव अ कंट्रोल ओवर हिज और हर माइंड? बोलो जी, आया ना? यानी वो कुछ बोलता है, कहता है, करता है तो उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरी है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो ना। अरे मेरा ही माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। How can I expect that somebody should control his or her mind and say exactly what I like it? बोलो जी, ऐसा कभी हुआ है क्या जिंदगी में कि लोग आपको वही बोलेंगे? आपके जैसा सुंदर बंदर पीछे बोलते हैं, कोई नहीं। तो जो सुंदर बोल रहा है उसके मन में कुछ बंदर है। हाँ जी, इसको पहले जानना जरूरी है। Yes or no? So let us be very much aware that अगर मैं किसी के कहने से, किसी के बोलने से परेशान होता हूँ तो मैंने तो मेरा रिमोट कंट्रोल दे दिया उस व्यक्ति के हाथ में। अब तो वो मुझे नचाएगा नहीं तो क्या करेगा? बोलो, क्या करेगा? आपने रिमोट ही दे दिया उसके हाथ में। Let us not give remote to anyone. Yes. भगवान बोलते कैसे होगा ये? अरे बोलते प्रिपरेशन ऑफ द माइंड। देखो, माइंड एक चीज ऐसी है, उसको कोई भी चीज एकदम से नहीं समझ में आती। प्लीज नोट इट। टक बोली टक समझ में आई, लगता है बट होता नहीं। उसके लिए भगवान ने भगवद गीता में बोला, अर्जुन तुम्हारा सवाल जायज है। क्या है तुम्हारा सवाल? भगवान को पूछता है, भगवान मेरा माइंड इतना चंचल है, मैं क्या करूं? भगवान बोलते तेरा ही नहीं, सारे दुनिया का माइंड इतना चंचल है, लेकिन मैं उसका बता देता हूँ क्या करना चाहिए। भगवान कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उस चंचल माइंड को स्थिर करने का बहुत सरल उपाय है, वो है अभ्यास। अभ्यास यानी सतत प्रयत्न। और दूसरा क्या है? वैराग्य। वैराग्य यानी एक केंद्रित मन की अवस्था। ऐसा जिसने पा लिया उसका मन उसका फ्रेंड बन गया। तो भगवान कहते हैं शुरुआत कहां से करो? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते
recap today's our discussion. We started with 3 important questions of life. What were the questions? What is that source of Happiness. Second question, what is that biggest challenge of my life? Third question, what is that source of sorrow? From where it comes to me? ये 3 प्रश्न हमने पूछे और इसके साथ हमने बहुत सारी चीजें को रिलेट किया और अभी हम आके पहुंचे कि हैप्पीनेस जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और दुख भी जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और कोई भी अनुभव में एक्सपीरियंस करता हूँ वो एक ही जगह है और वो है मन। कहाँ है वो? मन। इसका मतलब है अगर मैं मन को समझ गया तो मैं ये तीनों को समझ जाऊंगा और अगर मैंने तीनों को जीत लिया तो मैंने तो दुनिया जीत ली। बस ये ध्यान में रखना है। ये 3 चीजों को अगर आपने जीत लिया, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट इज अ फैक्ट। ये 3 चीजों को अगर आपने जीत लिया, अपने सुख को, अपने दुख को और अपने चैलेंज को, आप सोच के देखिए आपकी जिंदगी क्या होगी। So this we are going to explain in elaborate way in coming 2 days. Tomorrow 8 to 9, again evening 6 to 7:30. Next day again 8 to 9, and again 6 to 7:30. So this is what we have a time in our hand. So if you all can join together with us, it will be a great joy and a great journey to walk on this path of great peace and tranquility. Any question to anyone regarding today's topic? Unconditional love is with mother of children. Unfortunately, there is little expectation. Expectation, it is close to, but not the one. वो आएगा कहाँ है और कैसा है वो, इसमें आएगा हम देखेंगे, इसको सोचेंगे अच्छे से। सच्चा प्यार क्या चीज है और कैसे हो सकता है, किससे हो सकता है? Any other question? भगवान का नाम स्मरण करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोपाल बोलो। बोली गोविंद गोपाल भगवान की। जय। Please repeat after me.
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमद ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेव पूर्णमेव अवशिष्यते अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् Thank you for being with us. See you tomorrow. Thank you.